Hello everyone, in this video we will discuss one of the practice paper issued by the Director of Education Delhi. So question paper of class 10th science, maximum marks 40, time limit is 2 hours. There are 3 sections in the question paper. All sections are compulsory. Section A has 7 questions, each of 2 marks. Section B has 6 questions, each of 3 marks. And section C has 2 case-based questions, each of 4 marks. So we will start with the section A here. For this, a question is given to you. A diagram is shown here of a carbon compound. This is a diagram here. And we have to find out the bonding pairs. That is, we have to find out how many bonding pairs of electron are there in a molecule. So the first step is to write the structure in an open form. So for example, this is the structure here. So we will write it in the open structure like this. I have opened the formula here, CH3, CH3, CH2, 2 bonds above, O, O, CH2, CH3. Now I have to count how many bonding pairs are there. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So total 17 bonding pairs are there. ठीक है, हमें टोटल बॉन्ड्स बताने हैं और बॉन्ड्स कब बनेंगे, बॉन्डिंग पेयर कब बनेगा, जब एक बॉन्ड फॉर्म होगा, when 2 electrons are shared here. 1 electron pair formed, or we can say electrons are shared between 2 atoms. So total 17 bonding pairs are there. Okay. Now the next question here is C4 plus does not exist, but PB4 plus exists, although both belong to the same group and why. So जो कार्बन है that belongs to कार्बन group 14 here. ठीक है, अब ग्रुप 14 में कार्बन C4 प्लस है एंड C4 माइनस फॉर्म नहीं करता बिकॉज इट रिक्वायर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. देन वाई दिस हैपन दैट व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, कार्बन का जो ग्रुप है उसका लास्ट मेंबर लेड है, लेड कैन ईजिली फॉर्म. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज लेड हैज अ बिगर structure, so low ionization energy, meaning electron can easily be removed, hence it can easily form C4 plus ion. Whereas in case of कार्बन का बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, 6 प्रोटॉन से स्ट्रांगली बाउंड होता है न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल, सो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है. बट इन केस ऑफ अ लेड, बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज, इट कैन ईजिली रिमूव द 4 electrons. So this is the answer. Size of carbon is much smaller as compared to lead and form nucleus having 6 proton. In case of carbon, it has a 6 proton and it is very difficult to remove 4 electron as large amount of energy is required for this. But in case of lead, size is very big, so it can easily remove that 4 electrons. Now the second question here, consider the given section of the periodic table. It is given to you, period, this is first period, second period, third period and fourth period. Now these are the groups given to you. Now we have to identify what is A, B, C, D here. So where it is A, this is B, this is C, this is D. Now just we have to recall what are the members of group 1, that is hydrogen, lithium, sodium. So third group, first member A here will be sodium. Then what comes after potassium, that is calcium here, below the magnesium, and after K it is calcium here. So B here is calcium. Now just above aluminium, which element is there, that is 13 group, first element, that is boron. So C here is boron. And what comes after silicon, that is germanium. So here it is sodium, we can say. Now just below this magnesium will be the calcium here. Then what comes before aluminium in the group, that is boron. And what comes after silicon here, that is germanium. So from this question we get कि हमें जितने भी first 20 elements हैं, ठीक है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का हमें ग्रुप प्रॉपर पोजीशनिंग पता होनी चाहिए और पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक लर्न होना चाहिए. नाउ इन और ऑप्शन द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव साइज एंड द गिवन टू यू इज एन A minus A plus A, that is a parent atom,
a cation and anion. So since we have to arrange them in an increasing order, so cation is always smaller than that of parent atom, that of anion. Now I will explain this, how this happens. Now for example, just think about any of the element here, sodium, having configuration 281, that is 11 protons and 11 electrons. So as this atom or any parent atom lose electron, so now for example it form Na plus, then it will be 28. So number of shells डिक्रीज हो गए, विच मीन साइज स्मॉल हो गया. एट द सेम टाइम इसका एक और एक्सप्लेनेशन क्या है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, अब इसके पास 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन है. सो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई तो साइज स्मॉल हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस अब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो न्यूक्लियस का पुल ज़्यादा होगा जिससे साइज स्मॉल हो जाएगा. तो कभी भी कोई कटायन है, इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम. नाउ वी विल डिस्कस हाउ अनायन इज बिगर. नाउ टेक अ सेम एग्जाम्पल, और जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग अ chloride here it is 287. when we gain electron, it form 2, 8 and 8. now according to you the shell will remain same, so size सेम रहना चाहिए पर साइज बिगर हो जाता है. उसका रीज़न क्या होता है, इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आता है, अब इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है. बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन देयर साइज इंक्रीजेस. सो इफ वी comparing a parent atom, anion and a cation, we can take here example of Na minus also, then it will be 282 just for example. So again, because initially it is one electron is coming, there is an electron repulsion due to which size increases. So it is a general rule that cation is always smaller than that of parent atom and anion is always greater than that of its parent atom. Now one more type of a question can be asked here. Just for example, if it is A plus, A2 plus or A3 plus, now which one will have the bigger size? So greater the charge means greater the attraction, smaller will be the size. So greater the positive charge, smaller will be the size. जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है. नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये सोडियम का एग्जांपल दिया था कि A के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, पर प्रोटॉन तो सेम रहे सब में, तो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ती गई. और अगर न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो साइज़ क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा. तो जितना ज़्यादा हाई चार्ज होगा उतना स्मॉल साइज़ होगा. अब वाइस वर्सा है, अगर यहाँ पे A माइनस और A2 माइनस है तो किसका साइज़ सबसे बड़ा होगा, नेगेटिव्स का, क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी. ठीक है. अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप आर प्रेजेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो दिस इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वेयर कंटेन 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. ठीक है. तो आपको वैसे तो ये पीरियोडिक टेबल पूरा तो नहीं लर्न होना चाहिए, पर एटलीस्ट हर ग्रुप का एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, जिसको सीक्वेंस को लर्न करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट ग्रुप है हेलिना, करीना, रुबीना, चली, फ्रांस. ठीक है. आप इजीली लर्न कर सकते हैं, हेलिना, करीना, रुबीना, चली, फ्रांस. अभी जैसे अभी हमने किया था कि कैल्शियम यहाँ आ रहा है, दैट इज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए. ठीक है. सो दीज आर द ट्रिक्स बाय विच यू कैन ईजिली रिटेन एंड लर्न दैट विच एलिमेंट प्रेजेंट इन विच ग्रुप. नाउ फॉर एग्जाम्पल 14 ग्रुप, अभी हमने जर्मेनियम किया था, दैट सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम आता है. कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम. आपको सारा लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट देर आर इंपॉर्टेंट ग्रुप्स यू मस्ट नो दैट. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेलोजन ग्रुप है, सबकी वैलेंसी 1 है. एक मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी जहाँ पे पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न किया जाए, कैसे इसके पॉइंट्स से हम एटॉमिक नंबर से पोजीशन को फाइंड आउट करें, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी. बट आगे हम अब क्वेश्चन करते हैं. सो अभी का जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप प्रेजेंट. सो 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट P and Q fusing to give R, and this R then produce STUV. What do PQRS represent? So P and Q are just like gametes,
Gametes when fused they form zygote, and from the zygote we get the embryo here. So just for example, P and Q are here gamete, which when react R will be zygote, and what are S, T, U, V? They all are embryo here. Now the next question here is, this is the question here. Which part of the diagram represent the condition which is necessary to activate the enzyme when a seed germinates? Now when seed germinates, we know that seed germinates in the soil only. So what does it require? It requires water. Yes, it requires water. Suitable temperature. Yes. Light? No. Light is not an essential condition for the seed germination. Temperature is there and water is there. So out of these 4 points, which will be the suitable point? Then it will be here B, because B include water and B also include the suitable temperature. So these are the option. क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है. आपको 3 सर्कल दिए हैं. सर्कल में इस तरह से पॉइंट्स मेंशन है A, B, C, D. अब A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A तीनों ही सर्कल को कोइंसाइड कर रहा है. दैट इट इंक्लूड्स वाटर, लाइट, वाटर एंड टेम्परेचर. B ऑप्शन जो है वो सिर्फ 2 सर्कल को इंक्लूड कर रहा है, दिस एंड दिस. तो ये सर्कल किस किस के पार्ट हैं? वाटर के और टेम्परेचर के. C रिप्रेजेंट लाइट एंड वाटर, एंड D सिर्फ ये जो D एरिया है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जर्मिनेशन में क्या रिक्वायर्ड है? वाटर एंड टेम्परेचर. दैट ऑप्शन B हियर इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a blue color flower plant denoted by capital B is crossbreed with the white color flower denoted by small b. State the color of flower you would expect in F2 generation. What must be the percentage of white flower in F2 generation if flower of F1 plants are self-pollinated? So this one is a monohybrid cross, because here a dominant trait is crossed with the recessive one and only single character is taken here. So in this case it is blue, blue. We get the gamete capital B, small b, small b. So when they fuse, just for example, capital B with small b, this is the F1 generation which we are getting here. Capital B, small b. All are same here. All the 4 progeny are same, or F1 generation all will be blue. So this is the F1 generation in which all are blue. Now the second part of the question is, F1 is self-pollinated, that is BB is crossed with another BB. So from here we get the gamete capital B, small b, capital B, small b. Now when we cross this, then we get, in this case, capital B, capital B, capital B, small b, capital B, small b, small b, small b. So now what will be the color here? So capital B here is blue. This heterozygous is also blue. So here it is also, this one is blue, this one is also blue, this one is also blue, but this one is white. Now the question here is, what is the question here? The second part here is, state the color of flower you would expect in F2 generation. So we get 2 color, blue and white. And what must be the percentage of white flower in F2 generation if F1 plant is self-pollinated? So we get 1/4 generation, out of 4 only 1 is white, that is 25%. We get 25% white. And if the same question is asked for the blue, what percentage? Then it will be 75% blue we get and 25% white we get. Now for the next question, this is the diagram here. A magnet is there, a wire carrying current is there, but direction of current is not mentioned here. So what is the question asked in this question? That is, a copper wire is held between the poles of magnet. The current in the wire can be reversed. The pole of magnet can also be changed over. In how many of the 4 directions shown can the force can act on a wire? So now this is the diagram here. We know that magnetic field is always from north to south direction. Now we have the option that current can flow in
this direction just like this. So using Fleming left hand rule, we can easily find out the direction of force here. So by using Fleming left hand rule, we can find out the direction of force here. Now according to this rule, when thumb, the forefinger and the middle finger are mutually perpendicular to each other in such a way that this forefinger is along the direction of magnetic field and this along the direction of current. Just for example like this, अभी फोर्स नॉर्थ से साउथ लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ लग रही है और जो करंट है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, तो जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, दैट वायर विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली अगर मैंने अब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायरेक्शन, सो नाउ जस्ट फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, when magnetic field in this direction, current is in this direction, then force will be in the upward direction. So here two direction can be according to the field. अगर north से south है, अब अगर मैंने इसको भी reverse किया, then also the thing will remain the same, whether it will be in the downward direction or in the upward direction. So answer here will be two direction, that is that it can be downward or it can be upward depending upon the direction of current in the wire. If it is along this direction, it is in the downward direction. If it is along this direction current, then force will be in the upward direction, and the rule which is used to find out this is Fleming left hand rule. Now the OR option for this question is, how will you find out the direction of magnetic field lines in a straight current carrying conductor? Explain. So now it is given by the right hand thumb rule. Now according to this rule, if we hold a current carrying conductor in our hand like this, now just for example, if this pen is in current carrying conductor and current is flowing in the upward direction, so thumb is along the direction of current, then curled finger will give us the direction of magnetic field here. So just for example here, thumb is in direction of current, then this curled finger will give us direction of magnetic field. So here it is anti-clockwise. अब just इसका reverse देखें, if current is in the downward direction, then curled figure अंदर की तरफ जा रही है, that is it will be clockwise here. So depending upon the direction of current, magnetic field can be anti-clockwise or can be clockwise, and it is which rule? By which rule we can find out this? By right hand thumb rule. So what does that rule states? That if thumb is point along the direction of current, then the curled fingers will give us the direction of magnetic field.